Yes. Good morning, students. Today we take here it is combination of capacitance. So I think last class we have discussed that कि हमारे पास एक कैपेसिटर आ चुका है, राइट? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैपेसिटर का बहुत सारा जगह में मिलेगा तुमको. You know that in your home there is a fan which always rotate in anti-clockwise direction. Is it right? Maybe sometimes clockwise also it is in the table fan. वो जो भी हो, right? The rotation is depends upon or it totally depend upon a capacitor. उसमें एक cylindrical का रहता है, देखना तुम, है ना, cylindrical जैसा रहता है, तो that is a capacitor actually. तो कैपेसिटर का वैसे बहुत सारा फंक्शन है, खैर हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले टॉपिक तो आ जाए, है ना. तो क्वेश्चन ये है कि ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है ना. सो फॉर एग्जांपल तुम्हारा फैन चल नहीं रहा है, क्या करोगे तुम इसमें? चल नहीं रहा है, कुछ आइडिया लगाएंगे. तुमने पहला आइडिया लगाया कि कैपेसिटर ख़राब है, तो हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है ही नहीं हमारे पास. तो हम एक काम कर सकते हैं, उस सपोज तुम्हारा कैपेसिटर ख़राब है, आइदर यू चेंज द अनदर वन, और तुम उसकी जगह दूसरा भी लगा के उसको यूज़ कर सकते हो. कैसे? combinations, we know that there are two types of combinations. Number one, it is in series में लगा सकते हैं, is it right? और number two, parallel में भी लगा सकते हैं. सीरीज में लगाओ या फिर इसको पैरेलल में लगाओ. तो पहले देख लेते हैं कैपेसिटेंस के लिए हमने कैपेसिटर लेना है. कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा? सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर. सो लेट मी टेक इट हियर ओनली तीन लेते हैं, है ना, ओनली थ्री, दैट इज C1, C2 एंड C3. एंड लेट मी कनेक्ट विद द सोर्स. ये हो गया तुम्हारा DC सोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Clear? And how we define parallel? This is C1, this is C2, and this is C3. Is it clear? This is parallel. This is C1, this is C2, and this is C3. Clear? And let me connect with the source. This is connected with the source, positive and negative. Clear? So now ये हो गया तुम्हारा parallel. Parallel means connected with the same terminal. Series means connected with the what? First capacitor, second with the third one. इसको कहते हैं series. A capacitor is connected with only a terminal. Here all are connected with a terminal. चलो. Now in series, the two things you have to note it here, very simple. ये दो चीज तुमको हमेशा याद रखना है कि in series charges are same. Q, let me stand for the Q, है ना, are same. मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, are same. पोटेंशियल, ये हो गया V, पोटेंशियल is different in each capacitor. In parallel, what happened? Just opposite that, Q are different in each capacitor. Potential is same in all, right? यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसमें in all. all मतलब कैपेसिटर. So this are the two different important notations. याद रखना, इसके बिना हम लोग combination नहीं कर सकते हैं. Is it right? Q's are different in parallel. So now let me take the different thing. क्या है यहाँ पे? Different है तुम्हारा potential. तो कैसे करेंगे? What happened now? Look at it. This potential, is it right? And Q's are same. So what happened? Potentials whenever, suppose यहाँ पे तुम्हारे पास 10 volt है, तो 10 volt में ये distribute हो जाता है 3, 5, 2, maybe 5, 3, 3, 8 और 2, 10. Maybe यहाँ पे 5, 3, 2 है, 5, 3, 2, जैसे भी हो सकता है.
So distribution is, suppose this is V1, this is V2 and this is V3, and when we add all, जैसे मैंने 5 3 2 ऐड किया तो 10 मिला तुमको इसमें. So here also the total potential, it is equal to the addition of all the potential in the between the two plates. ये दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, इसके बीच में कितना है V2, इसके बीच में कितना है V3. So that's why we add and we get the answer. Now, what is C? C is equal to Q by V. So V is equal to Q by C. So let me write here, it is Q by C, Q by C, Q by C plus C1, 2, 3. Here also Q by C. This is the individual capacitor, where this is the total one. Q is cancelled. Your answer will come as 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is your formula. Is it clear? Okay, sorry student, I think ये दिखाई नहीं दे रहा तुमको. So let me write here, it is then. Let me remove this. After different. Now V, we know that, है ना, ये तो दिखाई दिया तुमको. This is right. So V is equal to Q by C. I will write here, it is Q by C, Q by C, Q by C and Q by C. 1 C1. This is 2, sorry. 2 and this is 3. Is it clear? This is 2 and 3. 2 and 3. Clear? Plus, as we know that charges are same, total is also same. Individual capacitor and this is the total capacitance. So charges cancel हो जाएंगे, है ना? I will get 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is your answer to get the total capacitance. Is it clear? Similarly here, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, है ना? Different क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? Here the different is the charge. So let me remove this, otherwise I cannot write. So here total charge is equal to Q1 plus Q2 plus what? Q3, है ना? ये पैरेलल के लिए है तुम्हारा. How it is in the parallel? You know that each and every one. And Q is equal to CV, CV, CV. 1, 2, 3 plus 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 CV. This is total potential, individual capacitors. और जो V है वो सेम है तीनों में, है ना? In 3 capacitor, in all the capacitors C1, C2 and C3, same potential as we have noted already. That's why it is V. And when we cancel the V, C is equal to C1 plus C2 plus C3. This is your answer of capacitance. So to find the total capacitance, this is the formula, and some important notations you have to note. This very important. It is clear. It is. So let me ask you one question, that what is the total capacitance of the given figure between A and B? What is the total capacitance इन दोनों A और B के बीच में total capacitance क्या है? जैसे मैंने बोला था कि suppose मेरे घर में एक कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए, लेकिन वो उतना हो नहीं रहा है, तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ. इज इट राइट? दिस इज द मेन फॉर्मूला. सो दे आर इन सीरीज, सो आई विल यूज द सीरीज फॉर्मूला. 1 by C, C1, 1 by C2 plus 1 by C3. What is this? This is the formula. To get the total capacitance, 1 by 2 plus 1 by 3. Let me write micro also, sometimes we forget this. And 1 by 4, है ना? So you know, if I'll do the LCM, I will get this. Is it right? So 4, 3, 2 LCM can you say? I think you will get 2, 3, 1, 2 and 3, right? 3 to the 6, 6 to the 12. So if I write the 12, then here it is what? 6. Is it clear? 12, I think you can write micro. Is it right? 6 plus what it is? 6 plus 4 plus 3. Sorry, micro will not come. 3, 10, 13. So 13 by 12 micro. So but your target is C, not 1 by C. So you write here C is equal to what? 12 micro by 13. So this is your answer of the total capacitance.
वो सिंपल निकाल सकते हैं, है ना. पैरेलल ऑल्सो वी कैन राइट. नाउ टुडे आई विल गिव यू सम क्वेश्चन सॉल्व करके हमको व्हाट्सअप में भेजोगे. मैं इसका सॉल्यूशन नहीं व्हाट्सअप में दूंगा, ठीक है. लेट मी नो कि हाउ मेनी यू आर इंटरेस्टेड. इज इट क्लियर? वन सेकेंड. टोटल कैपेसिटीज बिटवीन द फिगर ए एंड बी. सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको. दिस इज द होमवर्क and let me see how many you have to solve it. 2 सब इजी और इजी कर देते हैं ना. बट यहाँ से थोड़ा सा एक वायर लगा देते हैं यहाँ पे, है ना. हाँ, ये हो गया एक क्वेश्चन, है ना. नंबर 1, नंबर 2 थोड़ा सा और दे देते हैं. सो प्लीज सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. और इफ यू डोंट नो द आंसर प्लीज discuss with me. Between the terminals A and B, where all value is 2 microfarad, 2 microfarad, is it right? Again 2 microfarad, 2 microfarad, this is also 2 microfarad. All are 2 microfarad. Please solve it and give me the answer. Thank you.